Lieutenant General Nigar Johar is the first ever female 3-star general in the history of Pakistan and the first female Surgeon General of Pakistan Army. Hailing from Panchpir village in Swabi district, Nigar Johar was also the first female commandant of any armed forces unit and the first female to have commanded the largest hospital of Pakistan Army. Besides being an expert in hospital administration, public health, disaster management and emergency preparedness, she is also an expert markswoman. She is the recipient of Fatma Jinnah Gold Medal, Tamka-e-Imtiaz and Hilal-e-Imtiaz, along with an honorary membership at the Royal College of Physicians UK. Her untiring commitment, relentless resolve and infectious positivity enabled her to not only convert the largest hospital of armed forces into COVID facility within an unimaginable time, but has also been a source of constant inspiration for all of us. Hum Women Leaders Award acknowledges the efforts of Lieutenant General Nigar Johar's contributions in healthcare, national development and security. How were you as a child? What was it like growing up? जी जब मैं बड़ी हो रही थी तो ऐसा है कि मेरा बचपन तो यूजुअल था जिस तरह नॉर्मल सारे बच्चों का होता है. आई वॉज अ फ्रेंडली चाइल्ड एंड आई वॉज अ वेरी एक्टिव चाइल्ड एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड अ ह्यूज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. तो मैं उनमें खुश रहती थी और इन्जॉय करती थी और एक्सप्लोर करने में, और हमारे लिए तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी. तो हम तो अगर बाहर सीढ़ी पर बैठ के कुछ खा रहे हैं तो वो भी पिकनिक होती थी, और कुछ और कर रहे हैं तो वो भी अच्छा लगता था. तो बचपन तो was a fun. Any childhood incident or memory that helped shape your personality? चाइल्डहुड तो मेरा एक अच्छा चाइल्डहुड था जिसको जो मैं याद करती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी बचपन में कि जो समझती हूँ कि दे आर नॉट इंसिडेंसेस बट दे एक्चुअली शेप अप योर पर्सनालिटी. जिस एटमॉस्फेयर में आप ग्रो करते, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब आसपास जो है ना एक जैसे लोग थे और सबके घर में एक एमईएस का सोफ़ा होता था और एक जैसी चीज़ें होती थी, एंड वी वर नॉट कॉन्शियस कि हमारे घर में क्या है और क्या नहीं, एंड वी वुड हैप्पी. सो वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं, या देन यू आर नो लॉन्गर कॉन्शियस कि क्या चीज़ है, और ये उस कंपैरेटिव उसमें आप नहीं जाते. एंड सेकेंडली आप जब देखते हैं कि जी आपके माँ बाप बड़े इस बारे में पर्टिकुलर थे कि जी ऑनेस्टी क्या होती है और वो क्या होती है कि जी ऑफिस की अगर पेंसिल आई है तो वो यूज़ नहीं करनी है, या सो आई फील कि वो सारी बातें आपके अंदर चली जाती हैं और वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करती हैं. कोई एक इंसिडेंट नहीं होता, इट्स अ होल पैकेज जो आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है. What were your greatest fears as a little girl? What rules did you break? Not fears, but एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी when people would say कि ये खातून है, ये तो काम नहीं करेगी. So I thought a female was associated with not working somehow the other. So ये बात मुझे पसंद नहीं थी. सो मैं जब कैप्टन भी थी ना, तो मैं जब काम करती थी तो मैं कहती थी कि चाहे मेरे काम को लोग ये जज करें कि ये अच्छा है या बुरा है, वो उन पर डिपेंड करता है, बट कोई ये ना मुझे कहे कि ये काम नहीं करती. Describe your student life. In student life I was studious, but that didn't mean that I was not enjoying life. मैं पढ़ती भी थी और मैंने शुक्र है अच्छे नंबर भी लेती थी और ग्रेड्स भी लेती थी और सारा कुछ, लेकिन एट द सेम टाइम आई यूज़ टू एंजॉय लाइफ. आई सेड आई वाज अ फ्रेंडली पर्सन. सो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो मैंने जो है ना उनके बहन भाइयों की शादियों पे भी जाना और सिनेमा भी जाना, और जो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट लाइफ थी वो तो बहुत ही इंजॉय की. और उसमें जो है ना हम असल जो यहाँ पे ओडियन और प्लाजा सिनेमा था जिसमें हम जाने के लिए जो है ना टिकट खरीदते थे, फिर जाते थे और वार्डन से परमिशन लेना और उनकी मिन्नतें करना, एंड देन वुड गो एंड वुड एंजॉय. सो इट वाज स्टूडेंट लाइफ वाज गुड. How many times were you treated bad because of your gender in the force? Well, I was not treated bad because of my gender, but it is a male-dominating society. And in a male-dominating society, a female has to struggle more and work more, and she has to prove herself. So I feel every female that is here in this society, she has at least struggled 4 or 5 times more than men to prove herself. जेंडर की वजह से थोड़े से आपको प्रॉब्लम्स तो हर सोसाइटी में होते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी में भी होते हैं, तो there is a difference. You choose a career which was male oriented.
How difficult was it to make your way in this field? In our times, it was more difficult because people were not used to females working, and that they were not used to working females on the male side. So मैं तो otherwise भी जो है ना ऐसे profession में थी जिसमें जो है ना जो administration में थी, तो जब मैं कैप्टन थी तो मैं अभी भी मुझे इस बात पे हंसी आती है कि मैं आईटीसी में काम करती थी, सो आईटीसी के साथ था इन ऑफिसर टी रूम. सो जस्ट गोइंग टू द टी रूम, इनिशियली व्हेन आई वुड गो टू द टी रूम, द मैन ओवर देयर दे वुड लुक एट मी दैट व्हाई इज शी हियर. सो मैं कहती थी यार मैंने भी चाय पीनी है, एंड द आईटीसी इज़ क्लोज बाय, एंड दे वुड से दैट फिर आपके मौजूदगी में हम बात नहीं कर सकते. सो मैं कहती थी अच्छा है ना, ज़रा डिसिप्लिन आया आप में, आप लोग भी ज़रा तमीज़दार बने ना. सो दैट इन दोज टाइम्स इवन दिस वाज डिफ़िकल्ट. लेकिन फिर वक्त के साथ साथ तो चीज़ें, अब तो कोई इशू ही नहीं. What and who inspired you to choose army as a career? My father, he was an army officer and he wore army uniform. And I'm really proud of this uniform that I'm wearing, and it is because of him that I'm in this uniform. And it was a passion since then, since I don't even remember the days when I decided to wear this uniform, but I always wanted to wear this uniform. What was your feeling when you first stepped in the military academy with so many men around? To be very frank, I was reluctant, I was a little hesitant, and I was cautious, being a female in so many men. And in our class there were about 80 males and we were about 20 females. So more were males. So I thought even speaking loudly or laughing loudly is not right. But then after after some time, it became normal. And I would say that rather later on, they were my class fellows and course mates, and then they were kind of protected towards us. So later on we realized that वो तो हमारा ख्याल करते हैं. Can you tell about the difficulties you faced when you lost your family? Yes, that was a very, very difficult time. And of course, at the age that I was, at a younger age when you are newly married, you look towards your parents for so many things. So I think I lost them when I needed them the most. But then फिर अल्लाह का यही तरीक़ाकार है. So मेरी the whole life there was one thing that I missed, and that was my मेका. कि जब ईद आ रही है, कुछ और आ रहा है, तो सारे कह रहे होते थे कि हम अब घर जाएंगे और घर में ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे. So मेरे पास ये चॉइस नहीं थी कि मैं घर जाती. लेकिन मैं साथ ही ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा एक वो रहीम है और वो रहमान है. सो आई फील कि उसने मुझे मियाँ ऐसा दे दिया कि उसने मेरी वो सारी चीज़ें एक तरह से कंपनसेट, चलें पेरेंट्स को आप उस तरह से तो नहीं कर सकते, बट देन ही वाज द बेस्ट. सो मुझे आसानी थी कि चलो अल्लाह ताला ने मुझे साथी ऐसा दिया दैट ही अंडरस्टैंड्स मी, एंड वो मेरे लिए लाइफ आसान थी इस वजह से. What advice would you give to the next generation of female leaders? Generally, लड़कियों के लिए I would say that they should have confidence in themselves. They should work for their goals and they should work for their dreams, and they should excel in anything that they are doing. It is not important they are doctors or they are in the military or they are anything else. The important is they should do whatever they like to do, and then they should excel in that field. कोई भी सोसाइटी एक्सेल कर ही नहीं सकती जब तक women उस सोसाइटी में अपना रोल ना प्ले करें. What do you have to say about the initiative of the Hum Women Leaders Award? मैं समझती हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज हम जब तक फीमेल्स को इनकरेज नहीं करेंगे, जब तक उनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, तो फिर हम तो फिर अपना रोल प्ले नहीं कर रहे. सो इस लिहाज से तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं. और ऐसे प्रोग्राम्स देख के तो कितने लोगों ने मुझे वो कहा कि जी हम भी ये करना चाहते हैं, हम भी इस तरह जाना चाहते हैं. सो एक्चुअली इट इज़ इनकरेजिंग द फीमेल्स विच इज़ द एक्चुअल एम कि हमने प्रोग्रेस करना है, हमने एक लेवल पे जाना है. सो वी नीड आवर फीमेल्स.